So for time being, I can pause it, right? Yeah, you can pause, go and pause on Facebook, na? Okay, no, I'm not host yet. No, no, not on Zoom. I'm saying you can just go and pause it on Facebook. Okay, 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 okay. I'll do that. You can see now. You can do. You are able to do it. Just see. It's live on Facebook. Akshita I had done it pause on FB. Okay. Okay, okay, great, great. Thank you. So now you can do it once you are live. Once you Okay, okay. okay. So I'll just make you the host. Yes, yes. Thank you. Yeah. Okay. Welcome. Hello. हाँ सर FB live. Smita ma'am, once I start recording, so it will be directly Facebook live also, right? No, no. Recording and Facebook Live are two different things. No? Recording, if you start, it will start from now onwards, the entire recording. Okay. Facebook Live is like I had paused the page, you can anytime go and enable that page. Okay, I think now you can, start that page. I will stop live stream here from here. If you stop the live stream, you won't be able to live stream it again. Oh, okay, 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 okay. So you can, but you can just check. You might be able to, you know, unpause that FB page. Okay, just a second. I'll You able to do? he's checking it. Otherwise, I think you can start that live session. Okay, as you say, start. Yeah. You're using the new backdrop, no, ma'am? The Kirdar one. This one? No, no, not about that one. Like for the program, everyone are using a different backdrop, no? Kirdar one, na? Huh. Yes. Okay. Okay, Akshita, then I leave. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, welcome. Anuja, ma'am, this is fine. Music. Yeah. This is the backdrop, right? Yeah. Okay, I'm taking participants in the panel. Akshita, Huh? don't take right now, I think. Just wait for some Participants, time. participants. But let us wait for some time, no? Means like 5-10 minutes before you can take them. Okay. Till then we can ask no, Dean ma'am and HOS to join. Huh. Yeah.
Anuja ma'am, I'll take participants in now. Yes, ma'am. And also Siddhi and Kef, who are Yes. today's host. They've Siddhi joined. and Kef. Yes, yes. Hello, sir. Akshita, hi. Hello. Hello. Yeah, can you hear me? Yes, yes, yes. Great. So I'm online. So yeah, Yes, yes, yes. there you are. Okay. Vishal sir, can you come on camera? Yep. Hi. Yes, sir. Hello, sir. Hi. Hi, Vishal sir. Hi. Okay. Beda ma'am, can you come on audio? Sure. Hello, Akshata. Yeah, hi. Okay. Hi. So everyone, everyone is like, like no issues, right? No internet. Absolutely. No. It's absolutely clear. Clear, very clear, and visually, and also the sound for me. I'm good. Even I'm good, but I'll have to keep myself mute because this rain. Oh, you're in the car. Okay. Yeah. Okay. Sorry for that. Yeah. No issues. No problem. No problem. So the participants, Akshita, are coming at what time? 4 onwards, right? They're 10 minutes. joining. I mean, they're there in the attendees. I'm taking them in a panel. Okay, cool. Okay. Okay. So they're supposed to come from 4 now, Akshata. Yes, they're supposed to, but then we'll start like it is the MIT's tradition that we start on time. Superb. Good, Okay. good tradition. Here we Good have afternoon, everyone. yeah, Anuja ma'am. Hi. Hi. So myself, Anuja Palkar, I know Vishal sir and Beda ma'am and Niranjan sir, we welcome you. Thank you And so much. our head of school, Dr. Preeti Joshi, and our dean, Dr. Anuradha Parasar, will be here shortly. They were just in another meeting, so they are just few minutes away. So they will be joining us soon. Great. Great. No problem.
Hello everyone. We shall begin in 5 minutes. Namaste and a very pleasant afternoon to one and all. I am Bhumi Kodwani, student of first year Bachelor's in Journalism and Mass Communication. On behalf of MIT World Peace University School of Media and Journalism, I welcome you all to an exciting extravaganza, Spectrum Reloaded 2021. Last year, in the first edition of Spectrum, we witnessed a very strong participation from across the globe, which made it a grand success. This year, we're back with more energy, more enthusiasm, and more entertainment. There are 6 categories of participation in total, which are singing, dancing, monologue, instrumental, storytelling, and poetry. Good afternoon, Dean ma'am. Good afternoon, Preeti ma'am. All the judges, we have with us our Dean, Dr. Anuradha Parasar and Dr. Preeti Joshi, Head of School. So Niranjan sir, Vishal sir, Beda ma'am, these are the judges for today's event, ma'am. So, yes, we'll be starting sharply at 4 o'clock. Great. Looking forward. Dean ma'am and Anuja, I think it's 4. We can start immediately with the permission of chair. Yes, Dean ma'am, can we start now? Sure, please, let's. Yeah, please. Thank you. Thanks. Over to the host. Yes. Welcome all to Spectrum Reloaded 2021. I'm Mohammed Kaf, student of second year BAJMC, would like to extend a grand welcome to everyone present here. Today is our second event of Spectrum Reloaded 2021, that is Monologue Kirdar. Now, before we start, as per MITWPU's tradition, we will begin this event on an auspicious note by praying to the Almighty. I request the host to please play the World Peace Prayer. नमो दीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूति गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। I now request the host to please play the Spectrum Bulletin. खामोशाई, यह दुनिया एक रंगमंच है और हम इस रंगमंच की कठपुतलियां। Namaskar, I am Swarali Joshrao from MAJMC first year. On the behalf of MIT World Peace University, School of Media and Journalism, I welcome you to the second exciting event of Spectrum Reloaded 2021, Kirdar, that is a monologue competition. I am very happy to say this. Spectrum last year got immense response and a huge virtual footfall. Artists across the world participated and made it colorful with their performances. Excited, right? Let's go and check how our contestants of Spectrum Reloaded 2021 performs their own Kirdar. But before that, let's go to last year's spectacular Spectrum and watch some glimpses. Year 2020 was a very difficult, but at the same time, a very interesting year for all of us. It made each one of us realize how things can change and twist the situation. Even after going through the pandemic situation, MIT WPU School of Media and Journalism managed to showcase talent through the online medium. Spectrum 2020 was the first of its kind to call people from all age groups together to showcase their talents via different categories like singing, dancing, monologue, instrumental, and whatnot. We saw exceptional talent and were able to foster a strong community of artists. We all have an unexpected reserve of strength that emerges when life puts us to the test. And this is how Spectrum expects to see what kind of artistic strength one has. The event made us realize that nothing is impossible when there is talent inside you that can join boundaries and make us stand united. This year, MIT WPU has come back with its Spectrum event for all of you. As you all have seen the glimpses of previous year's Spectrum, I know you can tell that this year is going to be more and more entertaining. So, what are you waiting for? Join me for the second spectacular event of Spectrum Reloaded 2021, Kirdar. This is Ayush Pandey signing off. Until then, stay safe and stay healthy. Before we proceed any further, I request all of you to please come on camera as we would like to capture this beautiful moment in a virtual group picture. Okay, are we all ready? Thank you. Thank you, everyone. I literally saw so beautiful smiles just now. So, good afternoon and a warm welcome to all the MIT WPU dignitaries, guests, judges, faculty members, and all the participants on this digital dais.
I, Siddhi Sharma, student of third year BA Journalism, Mass Communication, and Mohammad Kaif, student of second year BA Journalism and Mass Communication, will be your host for today's event. I am excited and grateful to be here on behalf of the entire Spectrum team. We look forward to making this event exciting and full of zest, fun, and delight. Now, I'm delighted to welcome our beloved Dean, Dr. Anuradha Parasar Ma'am, Faculty of Fine Arts, Liberal Arts, and Media and Journalism. Without her support and supervision, this event would not have been possible. She inspires us in all facets. On behalf of School of Media and Journalism, I take this opportunity to thank you for providing this platform to us, ma'am. Now, I'd like to request Dean ma'am to address all the participants and everyone attending today's event. Thanks, Kev. Very good evening to one and all, and hearty welcome to Kirdar, which is MIT WPU Spectrum Monologue Competition organized by MIT WPU School of Media and Journalism under Swar Samvad at Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, Pune, India. And earnest welcome to judges of today's episode of Monologue, Kirdar, and performing artists for today, all participants, faculty, staff, students, and parents, and all the attendees who are attending this event online. Welcome and thanks for joining us for this cultural extravaganza, which is organized to galvanize and bring the vibe of positivity. And my heartfelt gratitude and thanks to judges for today's episode, Monologue, Madam Louise Hipp, who is German actress. Vishal Gaikwad ji, I see he's driving and still he's amongst us as judge. He's film director, and Vedagrani Saha, who is a writer, and Niranjan Kaushik ji, thank you so much for joining. He's director. So warm welcome to all judges at MIT World Peace University, Pune. And I also take this opportunity to extend a hearty welcome to all performing artists who are contesting today. And I also congratulate them on being shortlisted as contestants by MIT WPU Spectrum Selection Committee. And all Monologue contestants, we are looking forward to a great Spectrum evening today. In fact, a great Kirdar evening today. And I wish to reinform again that Spectrum 2021 is open to all artists from all age group, profession, and geographical location. And in our call for participation, we have clearly mentioned age is just a number and your talent never fail you. So it has no expiry date. So last time in Spectrum, we witnessed that this is the second episode of Spectrum. I want to inform all judges and the participants that last time we started the first edition. And in the first edition, we witnessed Spectrum artistic colors which spread and which cross national boundaries. And for majority of our Spectrum events, last year, we got registration from various countries, France, Poland, Nepal, Bangladesh, Pakistan. And in Spectrum Reloaded, which is the new, this 2021 edition, we have invited even judges from various countries. And we are happy that today, Madam Louise Hipp, I think she will be joining the German actress. She will also be here on the Spectrum virtual dice, Reloaded virtual dice along with other judges. I once again earnestly thank all judges of Spectrum 2021 for consenting to be on panel. And the meaning of Spectrum, as we have called out, is color of different artistic skills and prowess. And since July 3rd, 2021, we have been witnessing and have rejoiced to the fullest the Spectrum color we have witnessed in the last week, poetry recitation. And today it's filled with further more interesting, entertaining colors, and we are having Kirdar monologue competition. So today again, we are having Galaxy of Artists with us. And from bottom of my heart, I welcome and thank all these performing artists for being here with us today to make this evening special. And lastly, I compliment and congratulate MIT World Peace University School of Media and Journalism for organizing series of events under Swar Samvad,
Spectrum 2021 under Faculty of Media and Journalism, Fine Arts, Liberal Arts Law, FLFMJ Spectrum Reloaded. And I want to congratulate and compliment Akshita, who is the faculty coordinator, Dr. Preeti Joshi, Anuja, Anurag, Ashwant, Vikash, Riju Mithila, who had been working tirelessly along with all students to make this event happen. So all faculty, FLFMJ faculty members, and more importantly, all my dear students, congratulations for organizing Spectrum 2021 successfully with all colors of artistic skill, and special mention with high appreciation to all my dear students, especially BA Journalism and Mass Communication and MA Journalism and Mass Communication, and the student coordinators of Spectrum Organizing Committee, Sharve, Anushka, and all members of student organizing team for planning this event and for executing it so well. And of course, we feel happy when students are working so hard for their sincerity, hard work, and so much of dedication for shortlisting. We got, I think, more than 100 responses, and from that shortlisting of few, not an easy job, and that to be done in short period. And now I can see student moderators. They are all set, Mohammed, Kaif, and Siddhi, to take the proceeding forward. And I can also make out that all attendees are also curiously waiting to witness Color of Spectrum Kirdar. At the end, I wish all the best to all the contestants for their best performances today, and wishing you all a great, joyful gala Spectrum evening, MIT WPU Spectrum Kirdar evening. So everyone, let's come together to embrace the world of acting, Spectrum monologue at MIT World Peace University, and get ready for a partaking journey with the characters which are about to come your way. Thank you. Vande Mataram. Jai Hind. Thank you so much for your valuable words, ma'am. They really mean a lot to all of us. And now, I would take an esteemed honor to talk about a very cheerful and a wise personality, our Pro Vice Chancellor, Dr. R.M. Chitnis, sir, whose sage words always enlighten us and navigate us to the path of wisdom. Sir has never failed to motivate us to the times we have needed a bit of a nudge. We are very lucky to have you, sir. I think Chitnis sir could not join today, so we may move on. Yes, ma'am. The pillar of our department, our Vice Chancellor, Dr. N.T. Rao, sir. His ever-pleasant aura makes the arena positive and cheered. His dynamic vision and dedication are making our schools grow stronger by passing off each day and advancing towards the pinnacle of success and growth. Yes, Siddhi. Now, I would like to take the pleasure of talking about an enterprising educationist, Shri Rahul Vishwanath Karad sir, who has always been committed to channelizing the power of youth by ensuring that our true potentials are realized by providing us with a value-based and holistic approach towards our education system. With an aim to nurture the culture of peace, making education his vocation, he is indeed a dynamic personality. We really move forward with our event with the blessings of Shri Rahul V. Karad sir. Yes, Mohammed. Now, I cordially welcome our panel of judges for today's competition on the virtual dais. Ms. Louise Hip, Mr. Vishal Gaikwad, Ms. Bedagrani Saha, and Mr. Niranjan Kaushik. So now, before we begin with this spectacular event, let me give a brief insight of our university to all the participants. MIT World Peace University is situated in Pune, which is the cultural capital of Maharashtra in India. Our university is popularly known as MIT WPU. Our university, MIT WPU, is a center for scientific, educational, technological, and spiritual development. MIT WPU offers UG, PG, PhD, certificate, and diploma programs in liberal arts, fine arts, media and journalism, engineering, pharmacy, management, design, political leadership, governance, education, law, and computer sciences. You name it, MIT WPU has it.
At any given point of time, more than 60,000 students are pursuing various courses across 65 plus institutes of MIT. Thank you, Siddhi, for that wonderful introduction of our university. Now, coming to our department, School of Media and Journalism. It is an institution which has given us the opportunity to grow as an independent individuals and bring out the best of our talents. We are grateful to our school to provide us this platform to exhibit our ingenious and gifted potentials and various undiscovered skill sets yet to unfold and amaze everyone. I once again welcome you all to the second event of Spectrum Reloaded 2021. Spectrum means a band of colors that gives meaning to our lives and makes even an ordinary element a beautiful one. Today, we have an interesting event of monologue, Kirdar, a platform where candidates will get an amazing opportunity to showcase their talent and deliver monologues. So, without any further ado, let's get started. Well, when Naina asked Bunny, तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनी? And Bunny said, रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मेरी दिल की धड़कन मुझे मेरे कानों तक सुनाई दे. मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना भी चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. And we all felt it. The second event of Spectrum Reloaded 2021 is brimming with shades of different artistic skills. Let's begin with Monologue Kirdar. I would like to ask our honorable guest to grant us the permission and blessings to begin this competition. So, on a very positive note, we begin this competition. I request all the participants to abide by the time limit, that is 3 minutes. And I wish you all the very best for your respective performances. Now, we have our very first participant, Mr. Neeraj Pachpande. Over to you, Neeraj. Hello. So, just give me a- So, hello everyone. I'm Neeraj and I go to BMCC. I'm a second year student there. And I'd like to present this speech from the movie 300. It was a speech by Delius when he is about to give they get into a battle. So here how it goes. Remember us. As simple an order as a king can give. Remember why we died. For he did not wish any tribute or song, no monument, no poems of war and valor. His wish was simple. Remember us, he said to me. That was his hope. Should any free soul come across that place, in all the countless centuries yet to be, may all our voices whisper to you from the ageless stones. Go tell the Spartans passerby that here by Spartan law we lie. And so my king died, and my brothers died barely a year ago. Long I pondered my king's cryptic talk of victory, but time has proven him wise. For from free Greek to free Greek, the word was spread that bold Leonidas and his 300, so far from home, laid down their lives, not just for Sparta, but for all Greece and the promise this country holds. Now, here on this ragged patch of earth called Plataea, Xerxes' hordes face obliteration. Just there as the barbarians huddle, sheer terror, gripping tight their hearts with icy fingers, knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300, yet they stare. Now across the plain, at 10,000 Spartans commanding 30,000 free Greeks, the enemy outnumbers a paltry 3-1. Good odds for any Greek. This day, we rescue a world from mysticism and tyranny
and usher in a future brighter than anything we could imagine. Give thanks, men, to Leonidas and the brave 300 and to victory. Thank you. That was my part. Very well done, Neeraj. Up next, we have Sahil Devan Sharma. Over to you, Sahil. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम साहिल शर्मा है और मैं 24 साल का हूं। मैं स्वतंत्र थिएटर पुणे का एक कलाकार। आज जो किरदार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो एक लेखक का किरदार है जो अपनी मनोव्यथा आपके साथ साझा करेगा। चलिए शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वैसे भी मैं काम से ज्यादा बातें करना पसंद करता हूँ। ये मेरी स्टडी है, वो कमरा जहां मैं लिखता हूँ, खुद ही बनाई है। कमरा नहीं, कहानियां। खुद ही अपने हाथों से लकड़ी काटी, जोड़ी बनाई। हालांकि काफी गड़बड़ बनी है। मैं अपनी लिखाई का काम कमरे के उस कोने में करता हूँ, यहाँ डेस्क पर नहीं, क्योंकि ठीक मेरे डेस्क के ऊपर से पानी गिरता है। हाँ, मैं डेस्क को खिसका कर वहां उस कोने में रख सकता हूँ, लेकिन उसके नीचे जो गड्ढा है वो छिपेगा कैसे? क्योंकि मेरा कमरा पहाड़ की ढाल पर बना है। अक्सर मैं खड़े होकर अपने पड़ोसियों को सामने से गुजरता हुआ नजर आता हूँ। फिर भी खुश हूँ यहाँ इस कमरे में। बस एक शिकायत है मुझे कि मुझसे मिलने बहुत कम लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि हम लेखक लोग हमेशा मसरूफ रहते हैं, सोचते रहते हैं। गलत। यहाँ तक कि मेरी प्यारी सी भोली सी माँ भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। चुपके से आकर मेरा खाना दरवाजे के बाहर छोड़कर चली जाती। गर्मा गर्म खाना खाए तो एक अरसा हो गया। जब कभी मैं झांक कर बाहर वाली दुनिया को देखता हूँ तो मुझे लगता है जिंदगी कितनी तेजी से गुजरती जा रही है मेरे सामने। फिर भी मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे मजबूर करती है लिखने को। रोज रोज कहानियों पे कहानियां, पन्नों पे पन्ने, उपन्यास पे उपन्यास। और जवाब बिल्कुल सीधा और साफ कि मैं मजबूर हूं। लेखक जो हूं, कभी कभी तो लगता है कि मैं पागल हूं। नहीं, डरने की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं पागल सा महसूस जरूर करता हूँ। जैसे मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरे कानों में उसकी आवाज नहीं जाती, सिर्फ उसके होंठ हिलते नजर आते हैं और मैं मुस्कुराकर जवाब दे रहा होता हूँ, जी बिल्कुल, जी हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ। सारा वक्त एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता, क्या बढ़िया शख्सियत है कहानी लिख रहा होता हूँ तो मुझे मजा आता है, तो जब कहानी के प्रूफ पढ़ता हूँ तो मुझे और मजा आता है। लेकिन जब कहानी प्रिंट होकर आती है तो मुझसे देखी तक नहीं जाती। मुझे लगता है सब गड़बड़ है, ये कहानी तो लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। मैं अफसोस की गहराइयों में डूबा रहता हूँ और पब्लिक उसे पढ़ती है। हाँ, बहुत खूब, लेकिन वो प्रेमचंद वाली बात नहीं, या फिर अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो गालिब वाली बात नहीं। धन्यवाद। That was a splendid performance, Sahil. Now, moving on to our next contestant, Mr. Mohit Mahavar. सभी को मेरा नमस्कार। क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? Yes. जी, मेरा नाम मोहित महावर है और मैं 20 साल का हूँ और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं नाटक करता हूँ और जो मैं आज एकाभिनय करने वाला हूँ वो महारथी प्ले से, जो कि वैभव जी द्वारा लिखा गया है, उससे मैं करने वाला हूँ। तो मैं इसका थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। तो जब मेरा कैरेक्टर है कृष्ण जी का, तो जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास देवदूत बनकर जाते हैं तब वो 5 ग्राम मांगते हैं उनसे, तो दुर्योधन उन्हें मना कर देता है। फिर वो अपना विकराल स्वरूप दिखाते हैं तो दुर्योधन उन्हें कहता है कि मुझे अपने शब्दों से डराने की कोशिश मत कर कृष्ण। तो इसके बाद ये मोनोलॉग स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है।
तेरी यही इच्छा है तो मैं, ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। तो सुन, मैं देवकी नंदन कृष्ण हस्तिनापुर की इस राजसभा में महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। यह धर्म युद्ध होगा, परंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, परंतु अमृत प्राप्त नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला कसेला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धस जाएगी, कराहते हुए लोगों की चीखों से थरथराएगी। जीवन दान देने वाले इन हाथों से केवल और केवल मृत्यु दान होगा। मृत्यु भी कैसी? घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पड़े हुए जोंक की तरह पाकर मृत्यु की कामना करेंगे, परंतु मृत्यु केवल भाग्य वालों को मिलेगी। दमन की बिपाशा धक्केगी, आदमी आदमी ना रहकर नर पशु हो जाएगा। वो नर पशु जो इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार दे। ये वो समय होगा जब भाई भाई के लहू के प्यासे होंगे। सुलह की जगह संबंधियों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे। एक ऐसे नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख को शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक। न जाने किस क्षण दूध पीते बच्चे से लगा उर चीथड़े हो जाएगा। मां के गर्भ में पलता हुआ भ्रूण नीरे मां के लोथड़े में बदल जाएगा। धरती के सारे कोड जगेंगे। घृणा के मवाद स्वार्थ के फोड़ों से निरंकुश बहेंगे। ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। कर्म तपते लावे में समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्ष से लहू टपकेगा और भूमि शवों से फुट जाएगी। फिर सब समाप्त हो जाएगा। बचेगा तो केवल भयानक सन्नाटा और लाशों की सड़ान। हाँ दुर्योधन, अब युद्ध होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। Very, very, very well done, Mohit. So, moving on to our next performance, we have Miss Ishika Rai. Over to you, Ishika. All the best. Am I audible? Yes, you are. Yeah, okay. Good evening, everyone. My name is Ishika Rai, and I am pursuing mass communication from MIT World Peace University. And this is a monologue by a girl child who is innocent and she is facing problems in her studies. So, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 2 4s are, मैं फिर भूल गई। पता नहीं मुझसे लर्न क्यों नहीं होता है। जब से मैं स्टैंडर्ड 1 में आई हूँ तब से बहुत सारी न्यू थिंग्स लर्न करनी पड़ती है और मुझे समझ नहीं आता। मेरे सारे फ्रेंड्स लर्न करके अपना होमवर्क कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स ले आते हैं और मैं होमवर्क भी फिनिश नहीं कर पाती। टीचर भी मुझे नहीं समझती है। मैंने टीचर को बताया है, मैंने बताया है कि मुझसे लर्न नहीं होता, पर उन्हें लगता है कि मैं बदमाशी कर रही हूँ, लेकिन मैं बदमाशी नहीं कर रही। कभी कभी तो टीचर बहुत डांटती हैं और मुझे भूख भी नहीं लगता है, इसलिए मैं टिफिन भी नहीं खा पाती हूँ।
मुझे स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कभी कभी घर पे भी अच्छा नहीं लगता है जब मेरे रिलेटिव्स मुझे डांटते रहते हैं और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी नहीं जाने देते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और वो लोग मुझे गलत भी समझते हैं। मैं अपने रूम में जाती हूँ और टीवी ऑन करती हूँ और शिनचैन देखने लगती हूँ। शिनचैन बहुत हंसाता है। शिनचैन को देख के मैं खुश हो जाती हूँ। थैंक यू। That was an amazing performance, Ishika. Now, we'll move on to our next contestant, Miss Saira Ali Hussain Qureshi. Over to you, Saira. Thank you. Namaskar, Adab, and a very good evening to one and all. Saira Ali Hussain Qureshi, and I am pursuing B.Ed first year from MIT WPU. आज का जो मेरा किरदार है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वो मेरी दादी का है। वो एक बहुत बेबाक शख्सियत है, बड़ी हरफन मौला किस्म की है। उनसे इंस्पायर होके मैंने एक किरदार क्रिएट किया है और इसका मकसद ये है कि हम भी बुजुर्गी की तरफ जाने वाले हैं एक दिन, और उस पड़ाव पर पहुंचकर हमें अपनी नई जनरेशन से किस तरह जुड़ना चाहिए वो बहुत अहमियत रखता है। और नई जनरेशन के लिए ये मैसेज है कि घर के बड़े बुजुर्ग कितनी अहमियत रखते हैं, ये जानना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि घर के बुजुर्ग उस बरगद के पेड़ की तरह हैं जो आंगन की मिट्टी को समेट के रखता है, जकड़ के रखता है, और घर के बड़े रिश्तों को। चलिए शुरू करते हैं किरदार दादी दिल्ली वाली। बबली, अरे ओ बबली, ये कभी वक्त पर आ ही नहीं सकती, कोई फिक्र ही नहीं है। चश्मा कहाँ गया मेरा मुआ? 100 बार कहा है कि इसमें चेन लगवा दो, ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, गले में पड़ा रहेगा। मिल गया। ये तो महारानी लगी होगी मोबाइल के साथ। ये मोबाइल ना हुआ मुसीबत हो गया, बीमारी हो गया हर घर की। वाह वाह वाह, कांच ही नहीं है एक तरफ का। वाह, आ गई महारानी। क्या कर रही थी मेरी लाडली? मोबाइल पे लगी हुई होगी ना? मैं सुनूं तो सही कि क्या कर रही थी। तुझे जरा भी फिक्र है बबली कि इस घर के कोने में मेरी एक दादी भी रहती है, उसे कुछ जरूरत होगी वो आवाज देती होगी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? दादी, आई वॉज डूइंग माई मैथ्स। तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, बहुत टफ होता है। क्या करोगी जानकर? पढ़ाई ही कर रही थी। तुम भी तो अपना वो महाभारत और रामायण पढ़ती रहती हो ना, तो मैथ्स मुझ तक ही रहने दो, तुम अपना रामायण और पोथी पढ़ो। अच्छा, मैथ्स मेरी समझ में नहीं आएगा? जरा बैठो बैठो, जरा 5 मिनट बैठो और मैं सिखाती हूँ तुम्हें जिंदगी का मैथ्स। हाँ, तो क्या कहा तुमने? मुझे मैथ्स नहीं आता? जो तुम्हारी उम्र है ना, उससे 3 गुना ज्यादा साल मैंने किचन में गुजारे हैं। दाल में इनका कॉम्बिनेशन, चाय में पत्ती और चीनी, इन सब का जायका बरकरार रखना, ये मैथ्स नहीं है? घर में कितने पैसे खर्च होंगे और कितने बचेंगे, इसका हिसाब रखना मैथ्स नहीं है? और वो क्या कहा तुमने? महाभारत और रामायण ही पढ़ती रहूं? मैथ्स तुम तक छोड़ दूं? भाई तुम क्या जानती हो महाभारत के बारे में और रामायण के बारे में? महाभारत में अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा ना? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को ध्यान में रखते हुए ही निशाना बांधता होगा अर्जुन। और बताऊं, रामायण, रामचरितमानस,
इन सब के बारे में, और वो तुम्हारे पापा सुबह शाम हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं उसकी 18वीं लाइन में क्या लिखा है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। तुलसीदास जी कह गए हैं कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव को देखा तो उसे एक बहुत आकर्षित फल समझा, बस उसे खाने के लिए उड़ पड़े और पहुंच गए सूर्य देव के करीब। पर वहां तक पहुंचने में कितना सफर तय किया ये भी उन्होंने लिखा है। जुग यानी 12,000 साल, सहस्त्र यानी 1,000, और योजन का मतलब है 8 मील। तीनों को गुणा किया ना तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर, डिस्टेंस, ये तुलसीदास जी लिख गए 16वीं सदी में। और तुम कहती हो कि मुझे मैथ्स नहीं आता। वाह 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 वाह। कभी दादी के पास 5 मिनट बैठोगी तो जिंदगी का सारा मैथ सीख जाओगी। अच्छा अब मुंह मत फुलाओ, ठीक है। चलो तुम्हारा फेवरेट शाहरुख खान एक अलग किरदार में मैं तुम्हें दिखाती हूँ। टूटे चश्मे के साथ ही सही, दोनों देखेंगे। स्वदेश एक अच्छी पिक्चर है, उसमें मैथ्स, साइंस और थोड़ी रामायण भी है। क्यों, कैसी रही? थैंक यू सो मच। Very amazing performance, Miss Saira. Up next, we have Mr. Param Lakhani. Over to you, Param. All the best. Hello, I hope I'm audible and visible. Just a second. Okay. My name is Param Lakhani, a concerned person trying to be a human. My act speaks of humans, or rather people, I should say, because I see humanity diminishing, inching towards the brink in terms of both existence and belief. It talks about how humans have evolved for the worse. It talks about the concerns we should be raising as humans. But more importantly, it raises a question. Are we really worthy of the title of humans? Ladies and gentlemen, presenting before you, Shylock in a historical dystopia. Who is Shylock? Just a mere character in Merchant of Venice? Or rather, a shocked mirror image of all of us. Image of nationally or internationally suppressed humans, deprived of basic rights. Shylock is unclassified and nuanced. Shylock is me, and your Shylock is mere vocabulary. So the other day, I met Shylock. I asked him, what do you wish to do with a pound of flesh floating in maroon-tinged waters and 1,000,000 ducats of hope that abandon the 100,000s across black-dotted borders? 1,000,000 ducats of hope finally float away inside the invisible canoes of the Brahmaputra. Final, fatal. The quality of mercy is now strained, having set in the dark horizon, only to rise, but not in this morning sky. For in the words of fact, people of democracy, you can muffle the drum, loosen the strings of ire, but who shall command the skylark not to stay and sing? I doth not understand. In the yonder era, discrimination is sustained. But now, I fear to embrace the wind, to make a living, for the vigilance lurk in every corner, every street on the worldwide Ethernet. Ladies and gentlemen, this is Shylock in a historical dystopia. Thank you. That was an amazing performance, Param. Now, moving on to our next contestant, Miss Vaishnavi Bhaktankar. Over to you, Vaishnavi.
I hope I'm both audible and visible. Yes, you are visible and audible as well. Yeah, thank you really very much. So good evening to one and all present here. This is Vaishnavi, and today I'm going to perform a short segment of a very famous monologue from Khamosh, Adalat Jari Hai by legend Vijay Tendulkar himself. And the preface to this monologue is basically Miss Benare. She's being questioned for her personal life choices. And in a patriarchal moralistic setup, at least in the play that they were planning to do. And I think the rest monologue speaks for itself. So here I am. हाँ 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 बहुत कुछ कहना है मुझे. कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं. क्षण आए चले गए, तूफान पर तूफान आए और कंठ में ही घुट कर रह गए. एक के बाद एक तूफान आते गए और कंठ में घुट कर रह गए. छाती में प्राणांतिक आक्रोश उठे और फोटो को कसकर खींच. लगा कि कोई जान नहीं सकेगा, कोई समझ नहीं सकेगा इसे. जब जब मन में शब्दों का ज्वाल उमड़ता था, तब तब लगता था कि अपने आजू बाजू वाले लोग कितने पागल और बचकाने हैं. जी करता था कि उन पर मन भर हंसूं, सिर्फ हंसती रहूं. तभी दिल फूट फूट कर इतना रोता था कि लगता था कि हृदय फट जाए तो अच्छा, जान चली जाए तो अच्छा. लेकिन नहीं जाती थी. और जब नहीं जाती थी तभी उसके महत्व का एहसास होता है. जीवन को व्यर्थ समझकर जब फेंकने लग जाओ, तभी उसके असली महत्व का एहसास होता है. मजा है नहीं? अगर संजोग कर रखने लग जाओ तो फेंकने का मन करे, और अगर फेंकने जाओ तो उसके बच जाने का सुख मिले. बच्चों जीवन माने क्या है? जीवन माने ये है, जीवन माने वो है. जीवन माने चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ. जीवन माने प्रताड़ना है. जीवन माने विश्वासघात है. जीवन माने नशा है. जीवन माने आवारागर्दी है. जीवन माने ऐसा कुछ है जो कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ है. कुछ भी संपूर्ण नहीं है. मिलॉर्ड, जीवन ये एक महाभयंकर हस्ती है. उसे अभी के अभी फांसी की सजा दी जानी चाहिए. उसकी जांच पड़ताल करके उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए. लेकिन क्यों? क्या मैंने मेरे काम में कोई कसर की? प्राण देकर मैंने अपने बच्चों को बनाया है मेरे. मैं जानती थी कि जीवन आसान नहीं है. आदमी बहुत क्रूर हो सकता है, और इस जीवन का एक ही सत्य है, और वो है यह शरीर. आप इनकार कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, पर यही एक सर्वमान्य सत्य है. पर ये सारा विश्व मैंने अकेले पचाया है. वो तो जानते भी नहीं. मैंने तो उन्हें सौंदर्य की शिक्षा दी. ये सारा विश्व खुद पचाकर उनको बेताशा हंसाया है मैंने. मेरी सारी निराशा मेरे पास रखकर आशावादी बनाया मैंने मेरे बच्चों को. आपको क्या हक बनता है? क्या हक बनता है आपको कि आप मेरी इकलौती खुशी, मेरी नौकरी मुझसे छीन रहे हो? क्या हक बनता है आपको? क्या हक बनता है? Thank you really very much. Very, very, very well done, Vaishnavi. Up next, we have Miss Sukriti Gupta. She couldn't perform live with us today because of some technical issues. So I request the host to please play the recording of Sukriti Gupta. Good evening and namaskar everyone. I am Sukriti Gupta and I'm currently in the final year of BTech in Electronics and Communication Engineering. So this monologue is basically given by a woman who watches another woman in the neighborhood being subjected to domestic violence. This woman out here wants to reach out to her, she wants to help her in some way, but she finally realizes that self-help, courage and strength are the most beautiful possessions a person can ever have. So let's start with it. मेरे घर के सामने वाले घर में ही रहती थी. पूरा दिन अकेली रहती थी. पूरा दिन रेडियो सुनती रहती थी. रेडियो सुनना पसंद था शायद उसे, या शायद घर के अकेलेपन में अपना मन लगाने की कोशिश करती थी, पता नहीं. बालकनी के इस पार से देखती थी मैं उसे, न जाने क्या क्या किया करती थी.
कभी रसोई में जाकर यूं ही खाली पड़े बर्तनों को फैलाती, कभी उन्हें समेटती, कभी किसी दीवार के एक कोने से टिककर खड़ी हो जाती और फिर घंटों वहीं खड़ी रहती। तो कभी तेजी से आंगन की तरफ दौड़ती, वहां जाके सीढ़ियों पर बैठ जाती, अपने हाथों से अपने सर को पकड़कर अपनी गोद में छिपाकर बस रोती रहती थी। अपने पति की राह तकती थी शायद। आता था वो देर रात को, नशे में धुत, गवाए अपनी सुध-बुध, आकर उस पर चिल्लाता, हाथ उठाता, और वो करती भी क्या, आंगन की तरफ भाग जाती, किसी अंधेरी झाड़ में छिपकर खुद को बचाती थी। उस रात हम दोनों को नींद नहीं आई। उसने अंधेरी झाड़ के पीछे छिपकर खुद को बचाया, रात बिताई, और मैं बालकनी से भीतर अपने कमरे तक भी जा ना पाई। मेरी आंखें किसी चौकीदार की भांति उसकी निगरानी करना चाहती थी, और कल सुबह ही जाकर उसको ये बताना चाहती थी कि ये गम सहकर जीवन में कुछ नहीं मिलता। अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ता है। पर उस रोज तो उसके घर के दरवाजे पर ताला लटका था। बहुत दिनों तक कोई भी नहीं दिखा वहां। फिर एक रोज वो लौटी, मैं दौड़कर उसके पास गई, मैंने पूछा सब ठीक तो है ना। डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। कहाँ थी इतने दिनों तक, क्या किया उसने, क्या हुआ, सब जानना था। पर उसके चेहरे पर डर नहीं दिख रहा था। वो तो मुस्कुराई और मुझे देखकर बोली, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक होगा, अब वो कभी नहीं लौटेगा। अब उसके लौटने का इंतजार नहीं करूंगी, उसके मुझ पे चिल्लाने का, मुझे मारने का इंतजार नहीं करूंगी। मैंने उसे तलाक दे दी। वो ये सब बातें बोल रही थी और मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। उस पर आए साहस के भाव को मुझे कुछ और देखना था, खुद में समेटना था। उसका हर चेहरा देखा था मैंने, जेवरों से सजा दुल्हन का सुंदर सा चेहरा। अकेले घर के अकेलेपन को दूर करने की कोशिश में रेडियो चलाती, रसोई में जाकर बर्तनों को फैलाती समेटती एक लड़की का मायूस सा चेहरा। आंगन की सीढ़ियों पर बैठती, अपने पति के इंतजार में उसकी राह तकती एक बीवी का तन्हा लाचार सा चेहरा। अपने पति के हाथ उठाने पर, उसके चिल्लाने पर आंगन की तरफ भागती, किसी अंधेरी झाड़ के पीछे खुद को छिपाती, खुद को बचाती एक निर्दोष अपराधी का बेबस सा चेहरा। और आज देख रही थी खुद के लिए खड़ी हुई, खुद के हक के लिए लड़ी एक औरत का सुकून, गर्व, खुशी जैसे सब भावों से सजा हुआ एक चेहरा। यकीनन आज मैंने उसका सबसे सुंदर चेहरा देखा था। धन्यवाद। That was an amazing performance, Sukriti. Now, moving on to our next contestant, Miss Sarita Eknath Gura. However, due to some technical issues, she won't be able to perform live today. So we'll play the recording of her performance. I request the host to please play Miss Sarita's recording. हेलो, माय नेम इज सरिता गुरव और मैं अभी जो मोनोलॉग पेश कर रही हूँ वो देवदास मूवी से है। स्टार्ट करती हूँ। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी। उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता, ये तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है। तवायफों के कोठे पर रोशनी होती है तो सिर्फ ठाकुरों की वजह से। उनके घरों में औलादे पैदा होते तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। सच कहा अपनी बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने प्यार के 2 शब्द कहे तो क्या बुरा किया। क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी है। कभी सोचा है काली बाबू, उन्हीं कोठों पर
किसी तवायफ से तुम्हारी बहन भी पैदा हुई होगी। बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी को भी कोठे पर तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनती है। और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराई वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले के रंगीन दुनिया में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलती हूँ। What an astonishing performance, Sarita. Up next, we have Mr. Kritarth K. Kotnis. Over to you, Kritarth. All the best. Thank you. Am I audible? Yes. Okay, so greetings and wishes, everyone. My name is Kritarth Kotnis and I stay in Pune. I'm a 19-year-old student. So the monologue act which I'm going to be performing today, it is inspired by another monologue act, which is by Parag Dubey, and it is titled as The Chappal. So it is basically about a laborer. हमारा नाम मुकेश है। हम एक मजदूर हैं। वो चैनल वाले भैया हमको बोले कि यहाँ आओ और थोड़ा बात करो। अब हम क्या बात करेंगे, हम तो साधारण से मजदूर है। तो भैया बोले कि एक ऐसा बात बताओ जो तुमको बहुत खुशी दिया हो, बहुत अच्छा लगा हो, और एक ऐसा बात बताओ जो तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पहला बात, जब हमारी शादी हुई थी बहुत सज धज के तैयार हुए थे, हम अच्छे लग रहे थे। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो पूरा बारात हम साइकिल पे निकाले थे। हमको बहुत खुशी हुआ था। अब ऐसा बात जो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ साल पहले यहाँ एक मॉल बन रहा था और हम उसमें हम मजदूर थे, वहां पे हम मजदूर थे। और जब वो मॉल बन गया हमको अच्छा लगा। ऐसा लगा कि ये मॉल हम बनाए, हम बनाए ये मॉल। तो हम हमारे बीवी को बोले थे कि इसका उद्घाटन में हम तुमको लेके चलेंगे। तो हम अच्छे से तैयार हो, हम यही शर्ट पहने थे और हमारी बीवी वही साड़ी पहनी थी जो वो शादी में पहनी थी। बहुत अच्छे लग रहे थे हम दोनों। लेकिन जब हम उधर गए हमको अंदर नहीं लिया। हमने पूछा क्यों, तो वो गार्ड वाला भैया बोला कि तुम तो जूता भी नहीं पहने, तुम चप्पल पहन के आए हो। पर हम कभी जूता ही नहीं पहने हैं। हमको तो चप्पल का आदत है। तो हम उसको बोले कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मॉल हम बनाया है, यहाँ पे ईटा हम उठाए हैं। तो हंसने लगा। आजू बाजू का लोग हम पे हंसने लगा। क्यों? क्योंकि हम बोले कि ये मॉल हम बनाए हैं। फिर वो हमको धक्का दिया, हमको हमारी बीवी के साथ। गजब बेइज्जती हुआ था हमारा। वो बोला हमको जाओ यहां से। हम बोले ठीक है, अब चले गए हम वहां से। हमारी बीवी के साथ हम चले गए। धन्यवाद। Thank you, everyone. Thank you so much. Wow, that was an amazing performance, Kritarth. Now we'll move on to our next contestant, Miss Srividya Jankiraman.
Over to you, Srividya. Hello everyone. Am I audible and visible? Yes, you are. Okay. Thank you for having me on this. Okay, for this event, and I will be performing Mark Antony's speech addressing the Roman crowds from Shakespeare's Julius Caesar. It's one of my favorite plays. So, Srividya ma'am, just Yeah. request you to please just give me 1 second. We have our another judge here, Miss Louise ma'am. We welcome you on behalf of MIT World Peace University. She has just joined due to technical error. She couldn't join earlier. So she is here. So I just wish to welcome her. I wish to extend her a very warm welcome. So Louise ma'am, we have with us Dr. Preeti Joshi. She is the head of school for our School of Media and Journalism. Welcome, Miss Louis. Actually, we were waiting for you. Then we got to know that there is some technical problem, but really happy to have you here. And as per the tradition of MIT World Peace University, virtually with the applause, we welcome you, ma'am. Hello, everybody. Thank you for your invitation. I'm very honored to be here, and I'm very interested in all your monologues. That's great. That's great. Thank you. Thank you so much, Louis. Yes, over to you, Mohammed, now. All right, so now we have Miss Srividya Jankiraman with her performance. Over to you, Srividya. Thank you. I will be repeating my performance. It is I will be repeating the title of my performance. It is Shakespeare's Julius Caesar. The monologue is by Mark Antony addressing the Roman crowd after Caesar's death. I hope you enjoy it. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you that Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously had Caesar answered it. Here, under the leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. When did this in Caesar seem ambitious? When the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Thank you. What an amazing performance, Srividya. Up next, we have Miss Nidhi Fadnavis. Over to you, Nidhi. All the best. Hi, thank you so much. Yeah, hi. So my name is Nidhi. I'm from Pune and I'm a law student. So I'll be performing in Marathi and I'll just give you a brief of what all I'm going to do. So I've taken this monologue from a play, Sakharam Binder, which was written by Vijay Tendulkar it was first performed in 1972. So I'm playing the character of Lakshmi, and Lakshmi is a very pious woman, and she's always believed in all the traditional values and how an ideal wife should be. So Sakharam is a man who basically gives shelter to the discarded women in that village, and he had given shelter to Lakshmi, and then he had thrown her out, and then another woman named Champa had come in his house to stay with him. However, due to some dramatic events, Lakshmi again finds a place in Sakharam's house, and now Lakshmi, Champa and Sakharam are living in the same house, and Lakshmi has seen Champa having an affair with another man, and she's disgusted by that sight, and now she's having a conversation with God by how she's disgusted, and how no matter how Sakharam behaves, no matter how
badly he behaves. She wants to be with him. She wants to die by his side. So yeah, this is the gist. Then I'll be starting. Thank you. तुला माहितीये आहे का माहित तुला भयंकर फार भयंकर मला ना हे सगळं बघताना ती घेर येते की काय असं झालं होतं नाही मला सांग काय रे मी करू काय हे वाकडं नाही काय म्हणावं काय याला सीताराम सीताराम मी ना मागणं जायलाच नको होतं पण काय करू मी मला नाही ना राहवलं म्हणून गेले मी पण मी जायलाच नको होतं सांगू मला ना गेला आठवडाभर रोज संशय येत होता ही नक्की दुपारी जाते तरी कुठं म्हणून गेले मी त्यांच्यासाठीच गेले मी हो मिळालेलं सौभाग्य लाभलं नाही पण मनानं मी अगदी हेच सौभाग्य मानलं इकडून गेले ना तरी रोज त्यांचीच पूजा करत होते पती म्हणून पूजला मी त्यांना खरं हो हे बघ हे बघ हे बांधलंय मी त्यांच्या नावानं मी त्यांची आहे मरेन तर त्यांच्या मांडीवर मरेन त्यांच्या लाथा खाऊन मरेन आणि भरल्या चुड्यानं मरेन बरं त्यांच्याशी तिचं हे असं वागणं आणि त्यांच्या पाठीशी त्या परमेश्वरा भयंकर फार भयंकर हे सगळं बघताना ना मला मरण येईल तर बरं असं झालं होतं मी खरंच सांगते काय हे बाप कुठे जाईल ही नक्की नरक आहेत सीताराम बरं तिचं सोड तुला माहितीये का तिनं तिच्या नवऱ्याला लाथाडलं देवा ब्राह्मणांसमक्ष मिळाला ना त्याला टाकून दिलाय तिने हो खरं तर त्याला ती हवीच नाहीतर तो रोज कशाला येतो इथे तिलाच अडचण झालीये त्याची ती नकोसा झालाय तिला तो तुला सांगू का मला तर वाटतंय तिला वाटतंय की त्याला मरण आलं तरच बरं मी खरं सांगते तुला आणि ती वरून मला दरडावीत होती मी साधी आहे ती एक नंबरची पापी आहे महापापी माझं काय करेल ती काही नाही करू शकत मी पुण्यवान आहे माझं नाणं एकदम खणखणीत आहे हो सीताराम जय सीताराम बरं तिचं सोड तिच्या संगतीनं हे सुद्धा शिशी रे घरात दोघं एकत्र दारू काय पितात म्हणायचं तर काय दिवस नाही रात्र नाही या दोघांना कशाचं काही पडलेलं नाहीये रे माहितीये का आणि त्यांना माहित सुद्धा नाही रे ती अशी वागते हो परमेश्वरा सीताराम सीताराम जय सीताराम सगळं आठवलं की अगदी ओकाली घाण वाटत सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम हे ते आले होते सांगते मी सीताराम सीताराम येस थँक्यू बाई ग किती छान बोललीस ग तू that was an amazing performance Nidhi up next we have Sabina Sarwar over to you ma'am मेरी ओर से सभी को नमस्कार और क्षमा कीजिएगा इस तरह अपना परिचय देने के लिए मैं अपने किरदार के बारे में बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं किरदार निभा रही हूँ एक लड़की की जो कल अध्यक्ष बनने वाली है और वो कल अध्यक्ष बनने वाली है वो आज अपने आप को शीशे में देखकर अपने आप से कुछ बातें कर रही है और अपने आप को हिम्मत दे रही है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो अपने आप को हिम्मत क्यों दे रही है शुरू करती हूँ उठ तू इस तरह क्यों बैठी मैं जानती हूं मैं सब जानती हूं कि तेरा नाम सपना है लेकिन व्यंग्य तो ये है कि तेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हो सका सब कोई बात नहीं मैं जानती हूँ मैं सब जानती हूँ कि तू वो भूल नहीं पाती
कि किस तरह उस घटिया आदमी ने केवल अपने अहंकार और ईर्ष्या की वजह से तुझ पर तेजाब फेंका। मैं जानती हूं तू भूल नहीं पाती किस तरह लोगों ने तुझे ही गुनाहगार मान लिया था। मैं जानती हूँ तू भूल नहीं पाती वो दृश्य जब तू मदद की गुहार लगा रही थी पर तेरी मदद करने कोई नहीं आया। मुझे याद है, हाँ, वो कैसे कैसे हुआ था। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तू इस तरह सबसे मदद की गुहार लगा रही थी पर तेरी मदद करने कोई नहीं आया। ठीक उसी तरह जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और सब बैठे तमाशा देख रहे। अरे उसके लिए तो भगवान उतरे थे, मेरे लिए तो भगवान भी नहीं आए। पर तुझे रोना नहीं है, हाँ? हिम्मत रखनी पड़ेगी। नहीं देख, तू नहीं रोएगी। एक भी आंसू गिरा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सपना। हाँ, आंसू के संग ना बहूंगी सखी, बिना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी, बिना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, तन के घाव पे मरहम हया का, मन का घाव है प्यासा दवा का। नहीं, अब ना तू कल की प्रैक्टिस कर ले। तो तुझे लोगों के सामने भाषण देना है ना। हाँ, तू बता मुझे तू किस तरह बोलेगी सबको। हाँ, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझ पर सहानुभूति नहीं दिखाई। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने देश को ऊंचाई तक ले जाऊंगी, अपनी देश की सभी औरतों को मजबूत बनाऊंगी, उन्हें मार्शल आर्ट जैसे टेक्निक से परिचित करवाऊंगी। उनके लिए बेरोजगारी बस एक नाम रह जाएगा। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी। स्वामी विवेकानंद जी कह गए हैं, जिस देश में औरतों की इज्जत नहीं होती वो देश कभी विकास की ओर नहीं बढ़ पाता। और मैं अपने देश को विकास की ओर ले चलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा किया तूने। और मेरे सपना बहुत अच्छा किया रे तूने। ऐसे ही बोलना। अब अभी मैं कम सुंदर थोड़ी हूँ, मैं ना तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो जाती हूँ मैं। तैयार हो जाती हूँ मैं। Thank you so much.
Wow, that was a spectacular performance. I've literally got chills right now. Now, moving on to our next performance, we have Mr. Evendra Vasanta. Over to you, Evendra. Thank you so much, and good evening to everyone. Am I audible and visible? Yes, sir. Yeah. So I'm performing Major Puri from Court Martial. This play written by Swadesh Deepak. So shall I start? जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की, तो मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की है कि उसके साथ जुल्म हुआ। अगर हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका। विरोध करने के कई और तरीके हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे तो सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। विरोध करने के कई और तरीके हैं, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी ले इन दो अफसरों ने उसे गालियां दी, तंग किया, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। उसने खून किया है, खून। इसलिए आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। थैंक यू सो मच। An amazing performance, Evendra. Thank you so much. Moving on, we have Miss Vedvati Tipse performing. So over to you, Vedvati. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay. Greetings, everybody. My name is Vedvati Tipse. I am a student of ILS Law College. Today, I'll be presenting before you a small monologue from this very renowned natak called Thi Fularani. This natak this drama essentially revolves around two characters, Manjula and Professor. Manjula is this very lowly, 21-year-old flower seller who sells flowers on the roads, very uncouth, very uncivilized, living her life very carefreely. And the professor is a sociology professor. He one day bets with his friends and decides that he is going to take up this challenge where he's going to experiment and civilize this girl. So in the course of this experimentation, he takes her to his house and he treats her, he teaches her manners, he teaches her sophistication and stuff. But she takes it very negatively. She gets very irritated at the way he treats her. And this monologue is from this point where she is escaping into her fantasy, where she's daydreaming, and it's essentially every 20-year-old girl that dream to find her Prince Charming, and this is it. Through the course of this monologue, there'll be one point that she'll come back to her reality, and she'll be all spiteful towards towards Professor. Otherwise, she's imagining she's in her fantasy land, thinking of her Prince Charming. And if it may please all of you, I'd like to begin in 3, 2, 1. कुणी आणतील शिलीची साडी, कुणी देतील मोत्याची कुडी, कुणी घालतील फुलांचा सडा. तुला शिकवीन चांगलाच धडा. कुठूनसा येईल राजकुमार, तगडप 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 तगडप, सफेद घोड्यावर होऊन स्वार, तगडप 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 तगडप. नजरच जेव्हा नजर भिडल, झटकन माझ्या पायाच पडल आणि म्हणाल, राणी क्या खूबसूरती कैसी है अदा, तुझ्यावर झालो मी फिदा. माग गौरी माग, काय हवं ते माग, पण माझ्यावर धरू नकोस राग.
आपल्या गावचीच खोलीन, मनाची गाठ हळूच खोलीन. गालावर चढल लाजची लाली, नजर जाई अलगद खाली. म्हणताना यात काय अर्थ? उगाच उगाच होईल असं. कुंपणापर्यंत सध्याची धाव, टिटवीनी धरावी का दर्याची हाव? हेरीच्या कन्या सुतळीचं तोडा, कटाराच्या पाण्याला सोन्याचा धडा. मग राजाच येईल रथात बसून, ठप 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 ठप, म्हणाल तूच हो माझी सून. दरबारी धरत्याल मुठीत नाक, म्हणत्याल राजाचा मान तरीला. धन्यवाद. थँक्यू. Again, it was a spectacular performance. Now, moving on to the last performance of the day, we have Mr. Ajinkya Kulkarni. However, due to some technical issues, we won't be able to witness his live performance today. In the meantime, we'll play the recording of his performance. I request the host to please play Mr. Ajinkya's performance. Hello, my name is Ajinkya Kulkarni. I am 19 years old and I study at MIT, and I have created this monologue myself. I don't know who's seeing this. If somebody sees this, please give this to the police. Police, my name is Ajinkya. I had come here for a solo trip. I have been lost in the Sundarbans. It's been 7 hours. It's been 7 hours since I saw humans. I have run all out of food, water, everything. If my family is seeing this, Shweta, tell the kids that I love them, take care of them. The reason I am so terrified is that I saw a tiger before. He crawled past me. I have no idea how many animals are here. I don't know if I will survive here. What an amazing performance there, Ajinkya. Very well done. So now, as we are done with our performances for today, I'm really pleased to welcome our panel of judges for today's competition. First, we have Miss Louise Hipp. She is a renowned German actor known for her roles in The Wall Between Us 2019, Soko Wismar 2004, and Carpool. We have Mr. Vishal Gaikwad, who is an Indian film director who has worked predominantly in the Marathi film industry. Yes. So Siddhi, Kev, please go ahead. All right, so I'll proceed now. So we have Ms. Vidagrani Saha. Vidagrani Saha is a famous Bengali writer. She is Bengali film critic with Pratidin newspaper. She has published poetry book with renowned writer Subodh Sarkar. She has also been awarded National Prize for folk recitation. Next, we have Mr. Niranjan Kaushik, presently directing a crime series for Disney Plus Hotstar on air by September 2021. He recently wrote Karanjit Kaur, Sunny Leone's biopic for ZEE5, and now writing, creating, curating a lot more content for OTT platforms. Now, I would like to request our judges to address our participants and give us concluding remarks, starting with Niranjan Kaushik, sir. Thank you very much. Am I loud and clear to everyone? Yes, sir, you are. Awesome. Awesome. Oh, fabulous time spent. I mean, I
can't believe we logged in at 4 o'clock. I mean, a little before 4 o'clock, 3:45, it's 5:20 already. Phenomenal performances. I mean, I'm honestly very sort of pleasantly surprised at the amount of talent that is there, because what we have experienced in the last sort of 2 years, 2.5 years, ever since we've had these OTT platforms coming up, cropping up left, right, and center in India particularly, the demand for content that constantly sort of keeps coming our way is very high, you know. And as a filmmaker, as I'm a director, a writer-director predominantly, I also produce content sometimes. We have right from everyone from Netflix to Amazon, right down to MX Player to Z5. We have all of them constantly asking us for content. And what the one thing I've often felt the dearth of is that, you know, when we get asked for content, the struggle for us has always consistently been to find talent, and this has been absolutely phenomenal. And I would like to really thank Akshata for calling me to judge this, because it's absolutely delightful to see so much talent out here. And I'm definitely going to be reaching out to Akshata for, you know, every time I need to cast someone for any of my upcoming shows. This is where I'm going to sort of jump right into. So fabulous. I mean, to all the participants, I am absolutely delighted. To the organizing committee, superbly put together, and to the faculty members, thanks so much for this opportunity. Over to the next one. Thanks, Mohammed. Thank you so much, sir, for your wise words. Now, I request Ms. Louisa to deliver a few words. So hello again. I just saw a few of you, which is pretty sad, because I'm very happy to see you and playing, because all of you were so talented, and I'm so surprised. I've never seen any monologues in another language, only in English or only in German. So that was pretty interesting for me. But even though I didn't understand something because it was in Hindi or in another language, it was so expressional, and you could show a lot of yourself in the different roles. So that was very, very, just interesting to see. And also because right now I'm studying in Germany, no, in Switzerland, acting, and I'm learning a lot, and I do a lot of workshops, and also I've played in movies and theaters. So I think it's a very nice thing to know for you, is that you can give yourself a lot of time. So because sometimes you rush because it's kind of I don't know, it's not an audition, but maybe you have like a limited time and you think you have to rush now, but I think it's just better to enjoy and to have fun. And I saw it, but you can even have more, like take your time, and I think that's the most important thing. If you have kind of things like that you enjoy it, and that you're like confident, and that you see the fun in the playing. I think that's the most important thing, because I think for myself, I know that I'm sometimes stressed when I have an audition or something, and that's what I can give you on your way, on your progress to getting an actor or actress. And yeah, it was very nice to be here. Thank you so much, ma'am. Now I'd like to request Mr. Vishal Gaikwad to share some words. Yes, thank you, Mohammed, and thanks the Honorable Institution for having me here as a judge. Judging is the most difficult job, and one would never like to be a judge on anything, but I would rather prefer remaining a perpetual student, because remaining a student assures perpetual growth. So I would say myself as an audience, where I am amazed with the performances, especially with the content chosen by the students. I learned a lot, actually. So I must thank the Honorable Institution for having this kind of contest that encourages and hopefully
we would see these faces in coming years in the Indian film fraternity or a bigger platform. So I would like to say all the best to all the participants, and thanks to the MIT for having me here. That's all. Thank you. Thank you so much, Vishal sir. Now, I'd like to request Ms. Bidag Rani Saha to speak a few words. Yeah, hi. It's really, surprising. First of all, I would like to thank you, Akshata, for calling me here. And I can say that I'm so surprised by seeing this huge amount of fresh talent here. And I can completely, I can completely agree with Mr. Niranjan that while calling a good content that we need to create, or we want to, we want to, put it in platform, but there we need few fresh talent and the appropriate talent which could be suitable with that content. So yes, I can see a true hope for our OTT platform. And yes, learning can't even ever end. So it's a learning episode for me also, being here, being the panelist. And thank you guys. Thank you all. Yeah. Thank you so much, ma'am. Now, so we are done with all the performances of the day. Congratulations to all the participants for putting up such amazing and spellbinding performances. It was indeed a pleasure to be a witness to all of them. The results and the prizes will be announced on 2nd July 2021, and all the participants will be awarded with a participation certificate, and top 3 winners will be given a ranking prize. Now, I call upon our dynamic HOS, Dr. Preeti Joshi, to present the vote of thanks. Thank you, Chair. A very good evening to this galaxy of stars. Yes, students, you are really amazing, superb. You are not less than stars for sure. Splendid performances. I think your energy is infectious. We all can feel that. What kirdars you all have played. Some are from mythology, some are from literature, some are from movies, some are from dramas, and from all languages. It's in true sense, it's spectrum. It's a galaxy. So different people from different areas, from different geographic location with different languages coming together and performing and expressing themselves. So it's like a gala time for all of us, all expressing in the fullest way. So we really enjoyed it to the fullest again. And we really want to thank each and everyone who participated to this Spectrum Reloaded Kirdar event. As it is said by Shakespeare, we all are players, performers. This all world is stage, and we keep playing different roles in that. If you look at us, we are daughters, sons, friends. We are one part of the society. So different kirdars in our real life also we all are playing. So here we enjoyed each and every bit of your expression. We really loved your kirdar. Being teacher, we always see you playing different kirdars in the class also. We have seen that, how you mock your teacher, how you mock your friends. But really amazing. You all are very talented and future is really bright for you. So here I really want to thank you as I'm proposing the vote of thanks. I'm really honored to propose vote of thanks for this Spectrum Monologue Kirdar event because all stars are here. So I really want to thank each and every participant who performed over here. And at the same time, I really want to thank all the judges, Niranjan sir, then Saha ma'am, Vishal sir, each and everyone, even Louis ma'am also. They really spared their time and they accepted our invitation and contributed for the Spectrum event. So on behalf of MIT World Peace University School of Media and Journalism, I really want to thank them. At the same time, I really want to thank our university leadership, Professor Dr. Vishwanath Karad sir, who is founder president of this university, Shri Rahul Karad sir, who is executive president of this university, and our academic leadership, Dr. N.T. Rao, who is vice chancellor, Dr. R.M. Chitnis, who is pro vice chancellor, and the dean, who is support of this FLFMJ. I really want to thank each and every one of them who allowed us, who given us a chance to organize events like Spectrum. And last but not the least, I want to say that all faculty members who contributed very hard to make this event happen, along with all students coordinators, Siddhi, Muhammad,
and other students. So I really want to thank them on behalf of school. So all the very best. So many performances are going to come. Spectrum is not ended over here. This is the second part of Spectrum, and so many new avenues are opening. We are opening for you. We have singing competition, we have instrumental competitions, and all the competitions results will be declared very soon, as it is conveyed by Mohammed. On 2nd of July, we are starting, because before induction program, all these prizes and certificates will be given to students. So once again, I thank you each and everyone for participating in this event. Thank you very much. Thank you, ma'am. And we hope to see you and the spirit again until the next event, Ragamanch, which is on 15th June. So stay tuned. Until then, keep creating, experimenting, and exploring all the horizons. As they say, the sky is the limit. And now I would like to conclude the event by saying, picture abhi baki hai mere dost. So let's call it a day and end it on an auspicious note with the Pasaidan. I request the host to please play the Pasaidan. आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोन्मजजावे पसायदानहे जे खळांती व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरिताते तिमिरदा विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो देवांशील तो तेलाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषाचे चंद्रमे जे अनांतन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनिसिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये हो आवे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला
you. Have a great day ahead and stay safe, stay home. We will see you with our next event very soon. This is Siddhi Sharma signing off. Year 2020 was a very difficult, but at the same time, a very interesting year for all of us. It made each one of us realize how things can change and twist the situation. Even after going through the pandemic situation, MIT WPU School of Media and Journalism managed to showcase talent through the online medium. Spectrum 2020 was the first of its kind to call people from all age groups together to showcase their talents via different categories like singing, dancing, monologue, instrumental, and whatnot. We saw exceptional talent and were able to foster a strong community of artists. We all have an unexpected reserve of strength that emerges when life puts us to the test. And this is how Spectrum expects to see what kind of artistic strength one has. The event made us realize that nothing is impossible when there is talent inside you that can join boundaries and make us stand united. This year, MIT WPU has come back with its Spectrum event for all of you.